Lesson 08. Gulistan of Sadi. Sadi ki Gulistan. Once again in lesson 8, dear students and learners, welcome. The Gulistan of Sadi. Let's have a look about the author. Sheikh Sadi, 1184, 1292, like Homer and Shakespeare, was a great storyteller. He belonged to Persia. He traveled from India in the east to Tripoli in the west and wrote Gulistan, the great work of all times. The translation of Gulistan soon won the admiration of the European scholars. Theme: the morals and virtues of the kings affect their people a lot. The more unjust the king is, the more troubled his country will be. The prosperity of the people depends upon the virtues of the ruler. Sheikh Sadi was a great storyteller. He speaks to all nations and is perpetually modern, said Emerson. He thought of the Gulistan as one of the Bibles of the world, for he found in it the universality of moral law. The Gulistan, translated in Latin and English, became love for the people. It is interesting to note that English scholars used Sadi's translated parables in their divine books till it was discovered to be an English translation of a Latin version of Persian origin. Edwin Arnold has aptly described Gulistan in culinary terms as an intellectual pilaf, a literary curry, a kebab of a versatile genius. The readers are sure to enjoy these parables as food for thought. शेख सादी एक अजीम अफसाना निगार थे। एमरसन ने कहा कि वो तमाम अक़वाम से बात करता है और हमेशा जदीद है। वो गुलिस्तान को दुनिया की बाइबलों में से एक समझता था, क्योंकि इसमें इखलाकी कानून की आफाकियत पाई जाती थी। लातीनी और अंग्रेज़ी में तर्जमा शुदा गुलिस्तान लोगों की मोहब्बत बन गई। ये बात दिलचस्प है कि अंग्रेज़ी स्कॉलर्स ने अपनी आसमानी किताबों में सादी की तर्जमा शुदा हकायतों को इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि ये दरियाफ्त हुआ कि ये फ़ारसी निज़ाद लातीनी वर्जन का अंग्रेज़ी तर्जमा था। एडविन आर्नल्ड ने गुलिस्तान को पकवान की इस्तिलाहात में एक फ़िक्री पुलाव, एक अदबी सालन, एक वर्सटाइल जीनियस का कबाब कहा। क़ारीन यकीनी तौर पर गौर व फ़िक्र के लिए इन हकायतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। Once a king and a Persian were sailing in the same boat. They never been at seas, and never experienced any calamity. After some time the boat hit by a storm and started tossing. It was very inconvenient for the passengers. All remained quiet except the who, in fear of being drowned, began to cry and tremble and created inconvenience for the others. The other tried to pacify him by kindness and affection, but he didn't hear anybody. When the uneasiness lasted longer, the king also became displeased. In that boat there happened to be a sergeant, who said, "With your permission, may I quieten him?" एक दफ़ा एक बादशाह और एक फ़ारसी ग़ुलाम एक ही कश्ती में सवार थे। ग़ुलाम कभी समंदर में नहीं गया और ना ही कभी किसी आफत का सामना करना पड़ा। कुछ देर बाद कश्ती तूफ़ान की ज़द में आ गई और उछलने लगी। ये मुसाफिरों के लिए बहुत तकलीफ़देह था। सब खामोश रहे, सवाए उस ग़ुलाम के जो डूब जाने के डर से रोने और कांपने लगा और दूसरों के लिए तकलीफ़ का बायस बना। दूसरों ने शफ़क़त और प्यार से उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की ना सुनी। जब ये बेचैनी ज़्यादा रही तो बादशाह भी नाराज़ हो गया। उस कश्ती में एक सार्जेंट था, जिसने कहा, "आपकी इजाज़त से क्या मैं इसे खामोश कर दूं?" "It will be a great favor," the king said. The sergeant ordered the to be thrown into the water, so that he could have experienced the true danger of life. 2 persons threw him in the sea, and when he was about to be drowned they pulled him back to the boat, and clung the stern with both of his hands. Then he sat down and remained quiet.
This appeared strange to the king, who could not comprehend the wisdom in the action taken by the sergeant, and he asked for it. The sergeant replied, before he had experienced the danger of being drowned, he knew not about the safety of the boat. A man does not realize the worth of safety from the misfortune until he has tasted it. बादशाह ने कहा, यह बहुत बड़ा एहसान होगा। सार्जेंट ने गुलाम को पानी में फेंकने का हुक्म दिया ताकि वह जिंदगी के हकीकी खतरे का तजर्बा कर सके। दो लोगों ने उसे समंदर में फेंक दिया और जब वो डूबने वाला था तो उसे खींचकर कश्ती की तरफ ले गए और उसने अपने दोनों हाथों से कड़ी को पकड़ लिया। फिर वो बैठ गया और खामोश रहा। ये बात बादशाह को अजीब मालूम हुई, जो सार्जेंट के इस इकदाम की हिकमत को ना समझ सका, और उसने उसे तलब किया। सार्जेंट ने जवाब दिया, इससे पहले कि उसे डूबने का खतरा महसूस हो, वो कश्ती की हिफाजत के बारे में नहीं जानता था। एक आदमी को बदकिस्मती की हिफाजत की अहमियत का अंदाज़ा उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो उसे चख न ले। It is related that while a deer was being roasted for Nushirvan, a king of Persia, famous for his justice, no salt could be found. A boy was sent to a village to bring some salt. The boy brought it and presented it to the king, who asked whether he had paid for it. No, said the boy. Pay for the salt, said the king, lest it should become a custom and the village be ruined. Having been asked what harm could arise from such a trifling demand. रवायत है कि फ़ारस के बादशाह नौशेरवां के लिए एक हिरन भूना जा रहा था, जो अपने इंसाफ के लिए मशहूर था। नमक ना मिला। एक गांव में एक लड़के को नमक लाने के लिए भेजा गया। लड़का उसे लाया और बादशाह के सामने पेश किया, जिसने पूछा कि क्या उसने इसकी कीमत अदा की है। नहीं, लड़के ने कहा। बादशाह ने कहा, नमक की कीमत अदा करो, ऐसा ना हो कि ये रवाज बन जाए और गांव बर्बाद हो जाए। ये पूछे जाने के बाद कि ऐसी मामूली मांग से क्या नुकसान हो सकता है। The foundation of oppression was small in the world, said the king. Whoever enlarged it, so that it reached its present magnitude, is at fault. If the king eats one apple from the garden of a subject, his slaves will pull down the whole tree. For 5 eggs, which the king allows to be taken by force, the people belonging to his army will put 1,000 fowls on the spit. A tyrant does not remain in the world, but the curse on him abides forever. बादशाह ने कहा कि दुनिया में जुल्म की बुनियाद छोटी थी। जिसने उसे बढ़ाया ताकि ये अपनी मौजूदा शिद्दत को पहुंच जाए, वो गलती पर है। अगर बादशाह किसी रियाया के बाग का एक सेब खाए तो उसके गुलाम पूरे दरख्त को उखाड़ फेंकेंगे। 5 अंडों के बदले जिन्हें बादशाह ज़बरदस्ती लेने की इजाज़त देता है, उसकी फ़ौज के लोग 1000 परिंदे नेज़े पर डालेंगे। जालिम दुनिया में नहीं रहता, लेकिन उस पर लानत हमेशा रहती है। A king fell seriously ill, all hopes of his recovery vanished. The more the disease was cured, the more it became painful. At last the physicians agreed that this disease could not be cured except by means of bile of a person endued with certain qualities. Orders were issued to search for an individual of this kind. A son of a farmer was discovered to possess the qualities mentioned by the doctors. The king summoned the father and mother of the boy, whose consent he got by giving them a huge amount of wealth. The Qazi issued a decree to shed the blood of a person for the king. The boy was brought to the altar and the executioner was directed to slaughter the boy. When all was ready, the boy looked toward the sky and smiled. एक बादशाह शदीद बीमार पड़ गया। उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं। जितना इलाज किया जाता, मर्ज उतना ही दर्दनाक होता गया। आखिरकार तबीबों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि इस बीमारी का इलाज कुछ ख़ास खुसूसियात के हामिल शख्स के पित्त के अलावा नहीं हो सकता। इस नवैयत के फ़र्द की तलाश के अहकामात जारी कर दिए गए। एक किसान के बेटे में डॉक्टरों की बताई गई खूबियों का पता चला। बादशाह ने लड़के के वालिद और वालदा को बुलवाया, जिनकी रजामंदी उसने उन्हें बहुत ज़्यादा दौलत देकर हासिल कर ली। काजी ने बादशाह के लिए एक शख्स का खून बहाने का हुक्म जारी किया। लड़के को कुर्बानगाह में लाया गया और जल्लाद को हुक्म दिया गया कि वो लड़के को ज़िबा कर दे। जब सब तैयार हो गया तो लड़के ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। Why do you laugh in such a position? The king asked. A son looks to the affection of his parents, said the boy. If they fail, they are expected to bring the case before the Qazi to seek justice.
But in the present case, the parents have agreed to get my blood shed for the trash of this world. The Qazi has issued a decree to kill me. The king thinks he will recover his health only through slaying me, and I see no other refuge besides Allah Almighty. To whom shall I complain against your brutality, if I am to seek justice from your hand? The king felt disturbed, and on hearing these words he could not control his tears and said, "It is better for me to die than to shed the blood of an innocent boy." He kissed the head and eyes of the boy and presented him with a lot of wealth. It is said that the king also recovered within a week. तुम ऐसी हालत में क्यों हंस रहे हो? बादशाह ने पूछा। एक बेटा अपने वालिदैन की मोहब्बत को देखता है। लड़के ने कहा, अगर वो नाकाम हो जाते हैं तो उनसे तवक्को की जाती है कि वो इंसाफ के हसूल के लिए मुकदमा काजी के सामने लाएंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वालिदैन इस दुनिया के कचरे के लिए मेरा खून बहाने पर राजी हो गए हैं। काजी ने मुझे कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया है। बादशाह का ख्याल है कि मुझे कत्ल करने से ही वो सेहतियाब हो जाएगा और मुझे अल्लाह ताला के सिवा कोई पनाहगाह नज़र नहीं आती। मैं आपके जुल्म की शिकायत किससे करूं? क्या मैं आपके हाथ से इंसाफ मांगूं? ये बातें सुनकर बादशाह को परेशानी हुई और वो अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका और कहने लगा, मेरे लिए एक मासूम लड़के का खून बहाने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उसने लड़के के सर और आंखों को बोसा दिया और उसे बहुत सा माल पेश किया। कहा जाता है कि बादशाह भी एक हफ्ते में सेहतियाब हो गया। Happy learning!